There's news, there's sense, and there's nuisance. This show is all about that last bit. The week started with G14 behaving like little children. G14 नाम वैसे मैंने नहीं दिया है, सुधीर ने अपने आप को खुद ये नाम दिया है. यार सुधीर, अपने आप को कोई गोदी 14 बोलता है क्या? खुद को ही गोदी बोल रहे हो. Anyway, this is how G14 were behaving like children this week. PM मोदी जो कहते हैं वो करते हैं और जो नहीं कहते हैं वो तो करते ही करते हैं. क्या प्रधानमंत्री एक बार फिर चौंकाएंगे? अब की बार कौन सा बिल लाएंगे? क्या मोदी सरकार आज सरप्राइज करेगी? सवाल सबके मन में एक ही है, नरेंद्र मोदी क्या सरप्राइज देने वाले हैं इस बार? Remember the time when you were kids and your parents would go out on a work trip and then they'd come back home and you'd ask them, मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए इस बार? क्या सरप्राइज पापा लाए मेरे लिए? Same energy. Now, if you thought the boycotting of news anchors by the India Alliance would have resulted in any change on your TV news, I have a Gullu award of optimism for you. First up, India Alliance now has a new name. The India Alliance never ceases to surprise. India Alliance. बाप रे बाप, मतलब इतना दिमाग किसने लगाया होगा? कैसे लगाया होगा? बॉयकॉट कर दिया, इनको नया नाम देना होगा. डॉट 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 इट्स टू लॉन्ग यार. डॉटेड अलायंस, ओनली डॉटेड अलायंस, विल इट कैच? डॉट्स बढ़ा दूं, मोर डॉट्स. यार, इफ ओनली आई कुड गेट रिड ऑफ दिस अलायंस. यूरेका, यही हटा दो. इंडी 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 भिंडी की हो गई. इंडी इंडी की भिंडी, इंडी भिंडी सब्जी बनाऊंगा अब इनकी. बचपन में जैसे चिढ़ाने के लिए स्कूल में लोग नाम चेंज कर देते थे ना, सईद का शहीद कर दो, प्रियाली का चाय की प्याली कर दो, मनीषा का मशीना कर दो, बस चिढ़ाने के लिए ऐवे ही नाम चेंज कर दो. सेम एनर्जी. The boycotted anchor's revenge move was हम तुम्हारा नाम सही से नहीं लेंगे, ठीक से नहीं बोलेंगे, इंडी बुलाएंगे तुम्हें, और मोदी की शान में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. किस तरह से सदन में एंट्री के बाद नरेंद्र मोदी ने किस तरह से अपना बाहुबली अवतार दिखाया है, हिम्मत वाला अवतार दिखाया है, वो आज जानना, सुनना, समझना बेहद आवश्यक हो जाता है. बाहुबली, हिम्मत वाला, जवान भी डाल देते गुल्लू. इट्स द बिगेस्ट हिट ऑफ द ईयर सो फार आफ्टर ऑल. ये भी जो तस्वीरें हैं वो ऐतिहासिक हैं, क्योंकि आप देखिए कि प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा था कि पुराना घर छोड़ के जब हम निकलते हैं तो यादों का एक बस्ता समेट कर निकलते हैं. यार, संसद टीवी इतिहास रच रहा है. गुल्लू से सीखो कुछ, एनर्जी लाओ, थोड़ा थोड़ा लोगों को मोटिवेशन दो. इतनी लो एनर्जी कमेंट्री, वेरी बैड. ये इस समय की बड़ी खबर है, यानी प्रधानमंत्री मोदी पुरानी संसद से नई संसद पैदल चल के जाएंगे, संविधान हाथ में लेकर, और सारे सांसद उन्हें फॉलो करेंगे. ऐतिहासिक दिन होगा कल का, ऐतिहासिक दिन होगा कल का. See, no change in G14. Now you see, the India Alliance has been targeting the Modi government on inflation and unemployment in the country. But they haven't stopped at that. They're not just raising questions, they're already giving employment with this news boycott. बहुत सारे लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, भरोसा नहीं हो रहा होगा. विश्वास करना पड़ेगा सुधीर जी, it's happening. And the first beneficiary of the boycott of G14 anchors by the India Alliance is Mr. Tehseen Poonawalla. Some people had already predicted this beforehand. India Alliance launches Tehseen Poonawalla Employment Guarantee Program. और ये हो रहा है. इस हफ्ते की न्यूज़ ही देख लो. It was Tehseen's time to shine and he grabbed the opportunity with both legs and hands. पहले तहसीन ज्यादातर टाइम्स नाउ पे दिखा करते थे. अब it's तहसीन everywhere, but still no sense in news debates. या तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हो कोई व्यक्ति, या तो प्रेग्नेंट नहीं होता, आधा प्रेग्नेंट नहीं होता. कि जो बच्चा पैदा नहीं हुआ, आप उसकी मुंडन की तैयारी कर रहे हैं. And I congratulate the political analyst who likes Congress, Mr. Tehseen Poonawalla also, though he's my friend. At least the House of Peoples has it taken the right stand with respect to this bill. Anand, whenever I'm on the show with you and my fellow Anand and of course Charu, we are always on the right stand. Therefore, we are sometimes right out of the action. Tehseen Poonawalla was on multiple debates across several channels. Wow, Chandi hi Chandi. As Rupika said, तहसीन भाई आज भी आए हैं
कल भी आएंगे और आगे भी आते रहेंगे। तहसीन पूनावाला, मेरी तरफ से कोई लिस्ट नहीं निकलेगी, आई प्रॉमिस यू। You are getting personal. You don't know how to talk to your member of parliament. You want to counter her. You want to counter her. You want to counter her. I'll give you time. I'll give you time, but please do not interrupt. ये सही है यार, बीजेपी कांग्रेस को लड़वा नहीं सकते तो बीजेपी वालों को कांग्रेस की प्रॉक्सी से भिड़वा दो। Just look at the screen. One BJP person, one group editor Navika ji, same energy as BJP. One right-leaning analyst versus two political analysts and one activist standing in for India. हो गई balanced debate. Anyway, Tehseen taking on BJP pravaktas is a bit of a family tradition as we know, so it's nothing new for us. भाई वर्सेस भाई में भ्राताश्री, मैं आप पर आरोप लगाना चाहता हूँ जनता की ओर से, और जनता की ओर से अनुज मैं भी आप पे आरोप लगाता हूँ। भाई आज की बहस शुरू करने से पहले आप बता दीजिए कि आपकी चाल क्या है। चाल, चेहरा और चरित्र हम नहीं, आप बदलते हैं ठीक वैसे ही जैसे शतरंज की बाजी बदली जाती है। I really want to be invited for dinner by the Poonawalla brothers and witness what happens then. भ्राताश्री, मैं आप पे आरोप लगाता हूँ कि ये तंदूरी चिकन में थोड़ा सैफरन ज्यादा है। मैं तुम पे आरोप लगाता हूँ कि तुम हरा हरा सैलेड कुछ ज्यादा खा रहे हो। वैसे इस हफ्ते सारे राजनीतिक विश्लेषकों की चांदी ही चांदी थी, लड्डू इक्वली बटे। TP may have been the biggest beneficiary of the India boycott employment scheme, but there were others as well, like Akil Khan, who according to his Twitter bio is an AAP activist and TV penalist. Akil was doing dawa on BJP on behalf of AAP and India Alliance. 2019 के घोषणा पत्र में भी कहा था कि हम महिलाओं को आरक्षण देंगे, वो क्यों नहीं किया आपने? 2014 के पहले की बात करिए मैडम, 2014 के बाद क्या खत्म हो चुका है इंडिया? You may or may not remember Akil from a few months ago from Sushant's show. भाजपा के जो 20 हजार करोड़ रुपए लेके खा के भागे हैं, आपको बात सुनाई दे रही है? 1 लाख करोड़ रुपए आए हैं। आपको बात सुनाई दे रही है? किसने मना किया? नहीं देखना बाहर जाइए। बिल्कुल जाता हूँ। नहीं देखना बाहर जाइए। नहीं, बिल्कुल नहीं जाता। Then there was George Kurian, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस सपोर्टर, इनको भी फुटेज मिल गया। मेरे साथ जॉर्ज कुरियन है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक है, उनका अभिनंदन है। Others in the list included Tauseef Ahmed Khan standing in for TMC, Kapil Madan and Nikhil Jain standing in for Congress, Varun Purohit हैं, ये कौन है? वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के लीडर मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में हैं। कांग्रेस नेता? मैंने तो पहले कहीं नहीं देखा इस कांग्रेस नेता को। ट्विटर पे देखना जरा, मिट्टी का तन, मस्ती का मन, once a king, always a king. मतलब like other proxies, he doesn't even have political analyst or TV penalist written on his Twitter bio. Navika, at this point you're just calling some randos off Twitter and passing them off as Congress netas. How bloody desperate is that? Now, you always refuse to talk to News Laundry. So many times we have reached out to you for comments when we do stories and you always say, News Laundry se baat nahi karungi. Kutti. कुट्टी। We at News Laundry respect the fact that you don't want to talk to us. We won't just make up some Times Now representative, take some random bio off Twitter and say, Navika Kumar's channel's representative said XYZ to us. I'm a bounce. News or propaganda. Realize, realize, realize. 100% real account. That Twitter bio does exist on Twitter. We made it. But we won't use it as a stand-in for you. That'll just be too desperate and too times now-ish. In fact, not just Navika Kumar. Whenever News Laundry does stories on news anchors, we always reach out to them for their comments. We've always reached out to Arnab, Sudhir, Aman, and they never respond to us because you see they're above questioning. See, they never respond. हम तो कभी News Laundry में नहीं चिल्लाए, emergency, emergency. Also, at some level, we get it. I mean, if we reach out to Aman Chopra and Sudhir and ask them, why did you lie about video game jihad? Why did you make up a fictitious story? What response can they give us anyway? सब गंदा है पर धंधा है ये, सब गंदा है पर धंधा है ये। Now, this week, we saw a truly historic passing of the Women's Reservation Bill in the Lok Sabha. I know, there are some ifs and buts to the actual implementation of the bill. पहले census होगा, फिर delimitation होगा if all state governments agree, और फिर जाके 2030 में शायद से women's reservation truly हमको देखने को मिलेगा. Naturally, some women MPs like Harsimrat Kaur Badal were not super impressed with this bill. इतनी एक्साइटमेंट देश में सबने वेलकम किया कि 75 साल बाद इवेंचुअली we are getting our right. The hopes were built up till there.
only to be dashed in 24 hours, because in the details lies the devil. When the details came out that this reservation bill is going to come in after the census takes place, after delimitation, so sir, the census had been delayed by 2 years. How many more years is it going to be delayed by? किसी को आज तक कोई एक्सपायरी डेट नहीं दी है कि इस डेट तक हो जाएगा, हमको नहीं पता. 9.5 साल आप क्या कर रहे थे, और अब आप 6 महीने पहले आप लेके आ रहे हैं ऐसे का बिल जो अगले 5-7 साल तक किसी औरत को उसका हक नहीं मिल सकता. आज आप लड्डू दिखा रहे हैं औरत को, बोल रहे ये लड्डू आपके लिए है, लेकिन आप इसको खा नहीं सकते, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है. पिछले 5 साल में क्राइम अगेंस्ट वुमेन 26% बढ़ा है. इसीलिए तो सब मणिपुर में एक औरत के ऊपर ऐसी हरकत होती है और 3 महीने तक सरकार मुंह नहीं खोलती है. आखिर में नो कॉन्फिडेंस मोशन करके ही मुंह खोलती है. वुमेन रेजिस्टर्स जो इतने बड़े बड़े हमारे मेडल लेके आती हैं, महीनों से बैठी हुई हैं, लेकिन बाहुबली अभी तक इधर बैठे हैं. और बिल्किस बानो के रेपिस्ट को तो संस्कारी कह के इनके जो लीडर्स हैं स्टेज पे चढ़ा के उनको मान देते हैं. सर चलो मान लिया, अभी गुल्लू की तरफ उदकना ठीक नहीं है. There's still a long way to go, but let's be positive yaar. At least it's a start, and it'll be historic if it's implemented. And at this historic juncture, I would have really liked to learn about the history of this bill. Rajiv Gandhi first planted the seed of women reservation in 1987. The committee headed by Margaret Alva was constituted to present National Perspective Plan for Women. And one of the recommendations was reservation of seats for women in elected bodies. By 1992-1993, Prime Minister P.V. Narasimha Rao successfully managed to pass bills to reserve 33% of all seats and chairpersons' posts for women in rural and urban local bodies. The bills were passed by both the houses and became the law of the nation. Today we have 15 lakh elected women representatives in panchayats and nagar palikas across India. Back to reservation in Lok Sabha and state assemblies. Devi Gowda was the first PM to introduce the women's reservation bill in Lok Sabha. He didn't succeed in getting it passed because there was a lot of opposition to it from all corners. Back then, Uma Bharti, who was the BJP MP from Khajuraho, had said, "My demand is that there should be reservation for backward caste women also, as in the Panchayati Raj system. This should be incorporated in this bill because women from the backward castes suffer the most." फिर आए अटल बिहारी वाजपेयी जी. He also tried to introduce the bill but failed again. And then finally the Manmohan Sarkar got the bill passed in the Rajya Sabha but never introduced it in the Lok Sabha, and so the bill lapsed. Cut to 2023. आगे की कहानी कंगना से सुनते हैं. हमारे जो प्रधानमंत्री जी भी हैं वो कोई भी मुद्दा ला सकते थे, क्योंकि एक सरकार के पास में इतने सारे मुद्दे होते हैं और इसके नज़दीक तो शाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा मुद्दे होते हैं और है भी, जो कि हमारा देश एक्सपेक्ट कर रहा था. लेकिन उन्होंने नारी सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट एंड केप्ट वुमेन एज अ प्रायोरिटी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ दिस न्यू पार्लियामेंट. इससे उनकी विचारधारा एंड उनका, देखिए वो कहते हैं ना कि अगर आपको किसी का चरित्र जानना हो ना तो उनकी बातों पे मत जाइए, उनके एक्शंस देखिए. वाह वाह, सब मोदी जी की तो कृपा है. आगे सुनो, क्या क्या नहीं किया मोदी जी ने हमारे लिए. 2014 से पहले तो हमने खुद देखा है लोगों को पॉलिटिशियन के राष्ट्रपति तक के नाम पता नहीं थे, उल्टे सीधे नाम वो लोग बोलते थे. तो वो वक्त भी हमने देखा हुआ है, ये वक्त भी हम देख रहे हैं. कंगना, जस्ट बिकॉज तुमने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी 2014 से पहले, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को कुछ नहीं पता था, बस तुम्हें कुछ नहीं आता था. बेस्ट बिट वाज दिस. Navika asked Kangana, "Do you still stand by your statement that India got true independence after 2014? Kangana said, "Of course. असली आज़ादी तो हमें मोदी जी ने ही दी है. क्या नेहरू, क्या गांधी, कौन सा क्विट इंडिया मूवमेंट, क्या बकवास था वो, भक." After all that, Navika's counter to Kangana's assertions was this. विपक्ष का ये कहना है कि तब भी एक फ्रीडम मूवमेंट हुई थी, देश को स्वतंत्रता मिली थी, बड़े बड़े नेताओं ने बड़ा बड़ा रोल प्ले किया. रिपीट दैट अगेन. विपक्ष का ये कहना है कि तब भी फ्रीडम मूवमेंट हुई थी, देश को स्वतंत्रता मिली थी. अच्छा नविका, विपक्ष का कहना है कि आजादी की लड़ाई पहले भी तो हुई थी. ये अब फैक्ट नहीं है, इस पे भी डिबेट होगा. मोदी वर्सेस विपक्ष. #was quit India real or not? After all this, Kangana just got very strange somewhere in the interview.
एक टाइम था जब मैं शॉर्ट्स पहनती थी, जब मैं टी शर्ट पहनती थी, वो एक वक्त था जब मुझ में एक एस्पिरेशनल कि मुझे दुनिया में मतलब कुछ भी हो, भारतीय ना लग के कुछ भी लगना, एक वो हमारा माइंडसेट था। मुझे पता है आप भी किस टाइम पे शॉर्ट्स पहन के घूमती होगी। नहीं, मैंने कभी नहीं पहने। I wasn't as slim as you. मोदी जी के इलेक्ट होने से पहले लड़कियां शॉर्ट्स पहनती थी, अब साड़ी पहनने लग गई हैं। This is the problem with some of the right-wing folks out there. You look at the whole world through the prism of your own internal complexes. Many people were happily wearing saris before 2014 too. In fact, liberal, lefty, feminist type का stereotype था big bindi और साड़ी और झोला. It's true that when Kangana came to the industry, some Babalog types made fun of her English, what she wore. In fact, I clearly remember a Coffee with Karan episode where Sanjay Dutt was asked, what would you do if you woke up as Kangana? And then he said, I'd wear a salwar kameez. And Kangana just had to laugh at that idiotic joke. There's absolutely no doubt that Kangana faced sexism, unwarranted remarks on how she dressed, how she spoke, where she came from. And we loved her because she eventually took these guys head on. But Kangana, being made to feel like you're somehow lesser than everyone else because of what you wore or how you spoke is your personal story. It's not the story of the entire nation. Now the other big news of this week is भारत ने कनाडा को दिखाई औकात, घर में घुस के ठोकेंगे? क्वेश्चन मार्क। कनाडा को दो हिस्सों में तोड़ेंगे मोदी। अगला वर्ल्ड वॉर अब बस सीधा कनाडा और इंडिया के बीच में होगा, अगर जी न्यूज का बस चले तो। Things took a total nosedive for India-Canada relations this week. The TLDR version is that Justin Trudeau in the House of Commons said that Canada is investigating a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Now, this Canadian citizen is not just a citizen. He's the leader of pro-Khalistan group, Khalistan Tiger Force. He's accused of conspiring in the bombing of Shingar Cinema in 2007. He's accused of multiple targeted killings. India has designated him a terrorist under the UAPA. He's seen in videos training Sikh youth in handling AK-47s. He has organized a referendum on Khalistan in Brampton. He's also supposedly visited Pakistan in 2013 and 14 to meet Jagtar Singh Tara. Who is Jagtar Singh? He is now serving a life sentence in India for his involvement in the assassination of former Punjab Chief Minister Ben Singh in 1995. So basically, the dude has some serious criminal antecedents to say the very least. But Canada is not UP yet. यहाँ योगी राज तो है नहीं, तो गाड़ी ऐसे नहीं पलट जाएगी और मीडिया वाले वाह नहीं करेंगे गाड़ी को पलटते हुए देखा. Killing him off without a trial would be extrajudicial killing, which is frowned on in most democracies. And so Trudeau's allegations that India had something to do with it is very, very serious. India has denied this allegation as absurd and said, proof kya hai? Trudeau has not yet given any proof. You make such a big statement and offer no proof. That's highly irresponsible, to say the very least. The opposition leader in Canada, in fact, also expressed surprise and wondered why you'd make such a statement without giving all facts out. I think the Prime Minister needs to come clean with all the facts. We need to know all of the evidence possible so that Canadians can make judgments on that. I think we need to see more facts. The Prime Minister hasn't provided any facts. He provided a statement, and I will just emphasize that he didn't tell me any more in private than he told Canadians in public, so we want to see more information. Luckily, there's no Arnab or Palki in Canada and calling him a traitor for questioning the Prime Minister. Now, the big question everyone is asking is why would Trudeau make such a statement without giving any proper proof? You see, Trudeau hasn't been getting good press back home in Canada. His popularity is at an all-time low. Jobs and the economy, inflation and the cost of housing are some of the top concerns for Canadians, and they find Trudeau failing miserably at handling these issues. कुछ देशों में जॉब्स एंड इकोनॉमी पे लोग वोट भी डालते हैं और सरकारें भी गिर जाती हैं. How backward. Anyway, in this environment, a lot of analysts feel that Trudeau made that statement to distract attention from his real failings, to seem like a strong man taking tough actions. Some analysts say he may also probably be trying to woo extremist elements in the Sikh diaspora in Canada. The Canadian press, meanwhile, is not letting Trudeau off with an allegation.
Sample some of the Canadian newspapers we read this week. Canada has a proud tradition of freedom of speech and expression, but that does not extend to organizing terror training camps. If that allegation is true, Canada is indeed sheltering terrorists. If this government has been playing footsie with extremist elements in exchange for their votes, it is not worthy of the office it holds. If the Indian government is too ready to paint every advocate of an independent Khalistan at home or abroad as a terrorist, its critics in this country and some Canadian politicians are too willing to excuse violence and terrorism as legitimate dissent, especially if there are votes in it. Extraordinary allegations require extraordinary evidence. What an anti-national media. अपने प्राइम मिनिस्टर से कोई प्रूफ मांगता है? अर्नब, सिखाओ इन्हें कुछ. अरे असत्य में जयते में विश्वास करने वाले लोग. Not only is the media in Canada asking for proof, but some Canadians are also coming on Indian TV news channels criticizing Canadian media for not doing enough. Politicians ही नहीं, ये लोग अपनी मीडिया को भी accountable रखते हैं. Canadian media is very government controlled. It's all funded by the government. Every mainstream newspaper or TV station in Canada is either the CBC, the actual government, or their primary funding is the Liberal government of Canada now. Pause frame. Padmaja at this point is thinking, same energy. We are not even funded by the government, but still firmly under their control. Well, for any Canadian who wants to understand Indian politics, Indian culture, they're more than welcome to watch our links on YouTube and on Twitter. Yes, absolutely. Watch Times now to learn about the Indian culture of sucking up to power, never posing any basic questions to those in power, and vilifying anyone in the opposition who asks any question of your dear leader in power. Can those parties who sat on this fight for women's representation for over 2 decades today complain about why is it happening in 2027? They delayed it for 2 decades. Now they're talking about a delay of 4 years. There's a BJP spokesperson on your debate. Let them do their job and you try and do your job at least. At least try. Oh yes, and of course, one more thing you can learn about the Indian culture from watching Times now. In Indian culture, we vilify young women and blame them with no proof for murdering their boyfriends when their boyfriends kill themselves. Women can be possessive. It's been seen in Indian families that, the wife or the girlfriend doesn't really like too much of the man's relationships with his own family. It's happened. All our Saas Bahu serials are made of it. Back to India versus Canada. As things stand now, tensions don't seem to be easing. As we record this show, Indian visa services in Canada have been suspended. In all of this, regular folks in both India and Canada have been forced into uncertain times. Imagine if Canada suspends visa service for India now, in tit for tat. So many students take huge education loans to study there. There'll be so much of anxiety for them. Meanwhile, matters are not helped with nutters like this in Canada. Indo-Canadian Hindus, you have repudiated your allegiance to Canada and Canadian Constitution. Your destination is India. Leave Canada, go to India. How do you deal with such a nutter? ABP News anchor Jagvinder Patel gives a masterclass. गिरफ्तार करवाते रहिए और 4 दिन अंदर रह लेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा. कमाल की बात है, आप बच्चों का करियर खराब कर रहे हो. वो आजादी चाहते हैं, that's why. वो आजादी नहीं चाहते हैं, वो वोट डालते हैं, वो अपनी सरकार चुनते हैं. आप उनके नाम पे बाहर बैठ के प्रोपेगेंडा करते हो, अपनी दुकान चलाते हो. अरे आपने हिंदुस्तान की हर सरकार का ठेका थोड़ा ले रखा है. वहाँ चीफ मिनिस्टर हैं, वहाँ के चीफ मिनिस्टर देख लेंगे, वहाँ के लोग देख लेंगे. खुद ग्रैंडा वैगन में रहो, 5-star फैसिलिटीज लो और बात करो खालिस्तान की. जिन्नी देर तक असी रहांगे, असी खालिस्तान दी जंग जारी रहेगी और असी खालिस्तान लेके रहांगे. खालिस्तान लेके रहेंगे? पन्नू, I unleash Sudhir on you. जाओ दिया. जस्टिन ट्रूडो चाहें तो वो खालिस्तान का खाली स्थान अपने ही देश में आसानी से भर सकते हैं और कनाडा में ही एक खालिस्तान नाम का अलग राज्य बनाकर वहां खालिस्तानी आतंकवादियों को रहने की इजाजत दे सकते हैं. तमाम लोगों को वहां बसने की इजाजत दे सकते हैं और कह सकते हैं कि जिसे भी खालिस्तान नाम के इस प्रदेश में आकर बसना है वो आ सकता है, चाहे वो भारत से आता हो या कहीं और से भी आता हो. खालिस्तान का खाली स्थान. आज तक has a new anchor. मैं हूँ अंजना ओम कश्यप. मैं हूँ अंजना ओम कश्यप. आज तक की अंजना ओम कश्यप. चलिए आपको बता देते हैं, कंफ्यूज मत होइए. आप स्टूडियो में जिस अंजना को देख रहे हैं वो मेरी ही AI अवतार है. आज तक
एक अंजना काफी थी हमारे लिए, दो की जरूरत नहीं थी. No one asked for it. इस न्यू AI अंजना को देख के लगता है AI सना had some serious midlife crisis. I mean, what on earth is with this tattoo? पहले सना used to be dressed very professionally, classy, business suits. Then she started wearing skirts, all good. Then skirts with high slits. Now she's bearing her midriff and a tattoo. I don't want to sound like a prudish auntie, but really, can Sana get over her teenage rebel phase and become a news anchor? Who's in charge of her? And what are you going to do with her next? Make her wear a white sari and place her under a waterfall to give the news? That's all the nuisance we have for you this week. We'll be back next week. Until then, stay mad. That's the only way.